डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल आपको उनका नए सामने वाले का होना चाहिए। May I come in? वो क्या इतना बड़ा? Welcome, my dear AS students, to the ASRARIA notes coaching classes. Today we are going to study the Senior Zoology Ipe March 2024, Section 1, the very first VSAQ. As usual, I am going to give you 4 AS questions, out of which one will definitely be there in your upcoming board exam paper. तो बच्चों, आप लोग मेरे प्रीवियस जूनियर बॉटनी के वीडियो लेक्चर्स देखे हैं। मैंने 10 VSAQs दिए थे, इसमें से 8 VSAQs जूनियर बॉटनी फाइनल आईपी मार्च 2024 पेपर में आया है। 80% स्ट्राइक रेट अपने वीडियो से आया है। आप मेरे वीडियोस लेक्चर देखिए, आप अपना क्वेश्चन पेपर देखिए जूनियर बॉटनी पेपर का, कंपेयर करिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि आउट ऑफ 10 8 VSAQs क्वेश्चन डायरेक्टली केम फ्रॉम आवर वीडियो लेक्चर्स। तो यकीनन अपने ज़ूलॉजी सेकंड ईयर में भी अपने एएस क्वेश्चन ही रहेंगे फाइनल पेपर में। ठीक है, so let us start with the very first VSAQ. What it is? Give the dental formula of adult human beings. Right? Dental formula is nothing but arrangement of teeth in half of the jaw, upper jaw and lower jaw. We are having 2 jaws, right? Upper jaw, lower jaw. Upper jaw is called as maxilla, and lower jaw is called as mandible. And 2 jaws are having equal half joined by sutures, right? So dental formula is nothing but arrangement of teeth in the half of the jaws of upper and lower jaws, right? So we are having 4 different types of teeth, right? I for incisors, C for canines, PM for premolars, M for molars, right? So dental formula of our adult human beings is nothing but 2 1 2 3 by 2 1 2 3. This is incisor, this is canines, this is premolars, and this is molars, right? Incisors, canines, premolars, and molars. This is what about adult dental formula of human beings, right? This is for IP purpose. If you want NEET purpose, then you are having 4 different types of teeth, right? One is incisor, I, another one is canines, C, another one is premolars, PM, and last one is molars, right? M. So these incisors are chisel shaped and they help in cutting, but whereas canines are dagger like, helps in tearing, and premolars or molars are the grinding teeth, right? So we are having 4 different types of teeth, hence what it is called as heterodont, right? And these teeth are embedded in the socket. What they are? They are embedded in the socket. Hence what they are called as, this property is called as thecodont. They are embedded in the socket. Thecodont, right? Heterodont, different types of teeth, 4 different types of teeth. Thecodont embedded in the socket, and we get 2 times in our lifetime. Baby teeth, milk teeth, के बाद में वो permanent adult teeth आता है. 2 times आते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? Chyme periodont. Very much important. Dentition of human beings teeth is nothing but heterodont, thecodont and diprotodont. Already asked 2 times in the NEET competitive exam paper. ठीक है? चलिए. तो baby teeth जो दूध के teeth, milk teeth बोलते हैं, वो कितने dental formula of the baby human beings 2102, 2102, right? 2102. Incisors, canines, premolars and molars. So what it is? Baby teeth में कौन सा teeth absent रहते हैं? Premolars are absent in the baby teeth. Premolars are absent in the baby teeth, right? तो total number of baby teeth कितने रहते हैं? 20. और adult number of teeth कितने हैं? 32. तो कितने number of teeth twice आते हैं human beings में? That is also 20. So this is all about NEET UG competitive exam. लेकिन अभी फिलहाल अपने IPE theory board exam के लिए क्या है? Give the dental formula of adult human beings बोले तो क्या लिखना अपन? Dental formula is nothing but arrangement of teeth in upper and lower jaw half part. And dental formula of human beings is incisors, canines, premolars, molars. 2 1 2 3 by 2 1 2 3. This is all about our dental formula of adult human beings. Let us go for the second question now. So yes, bachcho, what is the next question? While juice contains no digestive enzymes, yet it is important for digestion. How? तो अपना bile juice के अंदर digestive enzymes तो नहीं रहते, बिल्कुल bile juice के अंदर digestive enzymes नहीं रहते. Yes, bile juice contains no digestive enzyme. Yes. तो क्या लेंगे बेटा फिर? bile juice के अंदर bile salts और bile pigments रहते हैं, right? bile salts और bile pigments. Bile pigments bilirubin जिसकी वजह से yellow urine आता और biliverdin जिसकी वजह से brown feces आता, right? तो bile salts, ये तो bile salts है.
क्या है ये? सोडियम टोरोगोलेट्स, राइट, पोटेशियम टोरोगोलेट्स। ये जो बाइल साल्ट्स है, these bile salts helps in emulsification of fats. Emulsification of fats. क्या करता बाइल साल्ट? बाइल साल्ट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और बाइल जूस जो रहते हैं ना, ये बाइल जूस जिसके अंदर ये बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं? एक्टिवेट्स लाइपेज, एक्टिवेट लाइपेज। तो लाइपेज क्या करते हैं? इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर। इन दिस वे बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है, बाइल जूस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है ना, बाइल पिगमेंट्स रहते हैं, बाइल साल्ट्स रहते हैं। बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन, येलो यूरिन, बिलिरुबिन, ब्राउन फीसेस, वो अब डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। लेकिन बाइल साल्ट्स, सोडियम टोरोगोलेट्स, पोटेशियम टोरोगोलेट्स, सोडियम ग्लाइकोगोलेट्स, राइट, बाइल साल्ट जो है हेल्प्स इन emulsification of fats, helps in emulsification of fat। जो emulsified fats है वो डाइजेस्ट किससे होते हैं? लाइपेज से होते हैं। तो लाइपेज क्या करता है? लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है। तो दैट लाइपेज कन्वर्ट द emulsified fat into fatty acid and glycerol। In this way bile juice helps in digestion of lipids and fats। ठीक है, ये था आपका आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज काइन? ये काइन क्या है बेटा? अभी अपन खाना खा रहे, खाना खा के सबसे पहले ओरल कैविटी में क्या करते हैं? मैस्टिकेट करते हैं। ठीक है, मैस्टिकेट करने के बाद निगलते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड एज बोलस, राइट। और जो अपन निगलने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिग्लूटिशन। क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ swallowing is known as deglutition। तो आफ्टर डिग्लूटिशन बोलस फ्रॉम esophagus enters into stomach, and because of stomach's churning movement gets mixed with the acidic gastric juice and forms semi-liquid based digested food called as chyme। After deglutition, अपन जब खाना निगलते हैं, that bolus, the process of swallowing is known as deglutition। After deglutition, bolus from esophagus will enter into stomach, right, through cardio-esophageal sphincter, gastric sphincter। And because of the stomach churning movement, because stomach को क्या बोलते हैं अपन? ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं। स्टमक के मस्कुलर वॉल चर्निंग मूवमेंट दिखाता है, इसकी वजह से this bolus will get mixed with the acidic gastric juice। क्यों acidic gastric juice? Because stomach secretes hydrochloric acid, HCl, right? So mixed with the acidic gastric juice and forms semi-liquid based digested food, that is known as chyme। तो आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज chyme? तो आप आंसर क्या लिखना बेटा? आफ्टर डिग्लूटिशन bolus from esophagus enters into stomach, and due to churning movement of the stomach get mixed with the acidic gastric juice and forms semi-liquid based digested food, that is known as chyme। Done? हो गया आपका। Name different types of papillae present on tongue of a man। अब different types of papillae, papillae क्या है बेटा? Projections है। Papillae are nothing but projections consisting of taste buds। अपन स्वीट खा रहे, साल्ट खा रहे, बिटर खा रहे, कैसा मालूम होता? बिकॉज ऑफ द टेस्ट बड्स प्रेजेंट इन द papillae। Papillae nothing but projections consisting of taste buds in the tongue, right? अब different types of papillae present on the tongue of a man पूछ रहा हूँ, क्या क्या है बेटा? एक तो है फल्जिफॉर्म, राइट, दूसरा है फिलीफॉर्म, तीसरा है सर्कमवैलेंट, और फोर्थ वाला है फोलिएट, राइट। तो थोड़े ऑथर्स मानते हैं फोलिएट पैपिले है और थोड़े ऑथर्स मानते हैं कि फोलिएट पैपिले नहीं है भाई। ठीक है, तो फंजिफॉर्म, फिलीफॉर्म, सर्कमवैलेंट एंड फोलिएट पैपिले, फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिले प्रेजेंट ऑन द टंग ऑफ द मैन। कहां-कहां है भाई? फंजिफॉर्म देखो,
फन करते हैं। कहाँ पे करते हैं? कहाँ पे करते हैं अपन फन? माउंटेन में चले गए, सेल्फी ले रहे, फन, टिप ऑफ द माउंटेन, राइट? फन कर रहे कहाँ पे भाई? टिप ऑफ द टंग। और फिलीफॉर्म पैपिले कहाँ पे भाई? और अपर सरफेस, अपर सरफेस ऑफ द टंग। और वोलिएट पैपिले, ये सर्कमफेरेंट पैपिले कहाँ पे रहेंगे भाई? बेस ऑफ द टंग, राइट? मतलब पोस्टीरियर पार्ट। वोलिएट पैपिले कहाँ पे रहेंगे भाई? lateral margins of the base of the tongue, lateral margins of the base of the tongue। किसी के आप कॉर्नर पे ठहरे हुए, ठीक है, सपोज आप एक बेंच पे खड़े हुए, एक टेबल पे खड़े हुए, टेबल के कॉर्नर में खड़े तो क्या हो जाता है? इम्बैलेंस होकर जाने के चांसेस रहते, राइट? तो फॉल हो जा रहा है, फोलिएट, lateral margins of the back of the tongue, ठीक है? ये था आपका different types of papillae present on the back of the man। Papillae are nothing but projections consisting of 10 buds in the tongue। 4 different types of papillae, pungiform papillae, फन कर रहे कहाँ पे? टिप ऑफ द टंग पे फन कर रहे हैं। Filiform upper surface of the tongue, circumambulate base of the tongue that is posterior part, foliate lateral margins of the base of the tongue। These are the 4 questions out of which one will definitely be in your first BSQ final board exam of the senior zoology। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल असरारिया नोट्स एएस सीरीज कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में भी 10 सेकंड BSQ। टिल देन टेक केयर। Monster।